Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the Educators Online Support. Today we will start from chapter number 4, Cells and Tissues. And we all know that human body or plant body, it is made up of trillions of cells, and when these cells organized, they form a tissue to perform their specific function. Some of the major concepts that we are going to see in this lecture is cell wall and cell membrane. After this lecture, you will be able to understand what is cell wall, what is its structure, its composition and its specific functions, and what is cell membrane, what is its structure and its function. So after this lecture, you will be able to contrast between these two structures, cell wall and cell membrane. Starting with cellular structures and functions, we are all well familiar with the basic organization of eukaryotic cell. हम सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है. यूकैरियोटिक सेल जो है वो असेंबलेज है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का, जहाँ पे हर ऑर्गेनेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. But there are some structures in the cell that are not organelles. वो organelles तो नहीं होते, but they are still very important to the cell, and these structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. So students, in this lecture we are going to get a detailed learning of cell wall and cell membrane. Cell wall. All living organisms have cell walls around their cells. Example, animals and many animal-like protists. Animals और animal-like protists के cells के round about उसके इर्द गिर्द एक wall होती है जिसको हम cell wall कहते हैं, जो कि एक non-living और strong component है cell का, and that is located outside the plasma membrane. अब इस नॉन लिविंग कंपोनेंट के फंक्शंस क्या हैं कि ये आपके सेल को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस, और जो इनर लिविंग मैटर है प्रोटोप्लाज्म, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. Now we will talk about the composition of cell wall, कि cell wall बनती किस तरह से है. तो जब हम cell wall की बात कर रहे हैं तो we are not going to say that it is a single layer. ये बिल्कुल single wall नहीं होती. The outer layer of plant cell is known as primary wall. जो outer layer होती है उसको हम primary wall कहते हैं, और cellulose जो है वो उसके अंदर most common chemical होता है. And now what is secondary wall? Some plant cells, for example xylem cells, also have secondary walls on the inner side of primary wall. प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पे एक और वॉल होती है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं. ये थिकर होती है प्राइमरी वॉल से, एंड इट कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स. सो लिग्निन इज द मेन केमिकल ऑफ सेकेंडरी वॉल. Now you can see this picture. Here the cell walls are connected with the middle lamella. आप देख सकते हैं कि जो outer side पे green boundary नज़र आ रही है आपको, that is the primary wall. प्राइमरी वॉल के बिल्कुल आगे आपको रेडिश कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में एक वॉल नज़र आ रही है, दैट इज़ सेकेंडरी वॉल, और फिर आपको येलो कलर में एक बाउंड्री नज़र आ रही है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So this is the difference between the primary wall, that is the outer wall, and secondary wall, that is the inner wall. Now you can see the ultrastructure of a plant cell, and this picture is taken from your textbook. आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं that it is a true depiction of cell is an assemblage of organelles. हमारे बुक के अंदर एक लाइन है कि सेल जो है वो ऑर्गेनल्स का असेंबलेज है, मतलब कि सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स असेंबल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो कि सेल को हेल्प करते हैं टू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन. In our proceeding lectures, we are going to learn the detail of each and every organelle. So here for your information, you can see that there is a cell wall, plasma membrane, and on the lower side there is plasmodesmata that I am going to explain you in the next slide. Plasmodesmata. There are pores in the cell wall of adjacent cells. दो सेल्स की जहाँ पे सेल वॉल्स कंबाइन होती हैं वहाँ पे
पोर्स होते हैं, उन पोर्स के ज़रिए उनके साइटोप्लाज्म्स कनेक्टेड होते हैं. दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि दो सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल्स ज्वाइंट हैं और उनके इन बिटवीन देयर इज़ अ पोर दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन. Up till now we have studied that plants have cell wall and cellulose is the most common chemical in it. Now the question is कि जो हमारे बाकी organisms हैं उनके अंदर जो cell walls होती हैं उनके अंदर main component क्या होता है अगर cellulose नहीं होता. So chitin is present in the cell wall of fungi. फंजाई के सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है एंड प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स. So in this way, with the help of cellulose, chitin and peptidoglycan, we can differentiate between the cell walls of various organisms and plant cells. Starting with the second topic of today's lecture, that is cell membrane. All prokaryotic and eukaryotic cells have thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को एक थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज ए सेमी परमिएबल बैरियर. सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करती है. सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स कि अपने अंदर से कोई चीज़ गुजरने देना. सो सेमी परमिएबल बैरियर का मतलब क्या है कि इट विल अलाउ ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इट. कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी वेल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल, और बहुत सारे सेल्स को अपने अंदर ही रहने देगी. इस तरह से सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, कि इंटरनल कॉम्पोजिशन को वो मेंटेन करेगी. इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, सेल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स. केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है और दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. If we talk about the composition of cell membrane, its chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of three components, that is proteins, lipids and very small quantities of carbohydrates. अगर हम सेल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो इट विल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. In this diagram you can see the fluid mosaic model of cell membrane. आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर है. पिंक हेड्स जो हैं अपर साइड पे और पिंक हेड्स की लोअर साइड पे, that is a lipid bilayer, and protein molecules are embedded in it. And other molecules such as cholesterol, glycoprotein and glycolipid, they are also the major component of our fluid mosaic model, and they help to maintain the fluidity and elasticity of our cell membrane. So this is the fluid mosaic model of cell membrane. Here is the detailed description of fluid mosaic model. That is, according to this model, we have seen that there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded, and this lipid bilayer is responsible for fluidity and elasticity to the membrane. लिपिड बाइलेयर हमारी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड in cell membrane, and these carbohydrates are joined with the help of proteins and lipids of membrane. And we can see that in eukaryotic cell, cholesterol is also present in lipid bilayer, and all the organelles, that is mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and nucleus, they are all bounded with the help of cell membrane. As a task to do, you have to read these topics thoroughly, and while reading, underline or highlight scientific terminologies, difficult words and learn their meanings. You have to learn these two topics, cell membrane and cell wall. For your practice, draw the diagrams of plant cell, animal cell and fluid mosaic model of cell membrane on your rough notebooks and do practice them. So this was your today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture.